Welcome to all of you. Just मैंने एक दो slides आपसे share करना चाहता था, so I'll bring them up. So basically, what I'm focused on is sharing with you some thoughts कि entrepreneurship में कैसे approach करते हैं और what some of the lessons I have learned. मैं वैसे लाहौर से हूँ और अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ के तो अमेरिका में मैंने पढ़ा है और यहाँ I did 7 startup companies. तो अब सिलिकॉन वैली में रहता हूँ और आई एम आल्सो टीच एट सम दीज यूनिवर्सिटीज लिस्टेड ओवर देयर. So I've been teaching about entrepreneurship, been involved with Aspire for 5 years. I'm the chairman right now and on the board. Problem is that most people start incorrectly. They start with a solution. So we need to figure out there are a couple of thoughts I want to share with you. First thought which I want to share with you is nobody from outside Pakistan is going to come and somehow solve our problems. That's not going to happen. Nobody, we keep thinking, भाई IMF कर देगी, अमेरिका कर देगा, ये कर देगा, चाइना कर देगा. नहीं जनाब, कोई करने को तैयार नहीं है. पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ पाकिस्तानी सॉल्व कर सकता है. तो इसलिए एस्पायर हमने शुरू किया था ताकि हम लोग आपस में मिलकर आए और देखें क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स गेट दिस क्लियर. वी नॉट वेटिंग फॉर एनीबडी, वी गोना डू व्हाट वी गोइंग टू डू. Second thing which is important to realize here is Pakistan actually is in a pretty good position. Most people are surprised when I say this. There are many things wrong with Pakistan. There are 95 things wrong with Pakistan. I can make the list. But there are about 4 or 5 things good about Pakistan. So let's understand and appreciate the 4-5 चीजें जो हमारे पास सही है कि नहीं है. Number one, our population is growing. It looks like a bad thing. It's not a bad thing. This is one of the good things. Most Western countries' population is declining. Europe is 778 million people right now. By 2050, it'll be 520 million people. You need a birth rate of 2.1 babies per woman to maintain the population. Europe is 1.6. Japan is 1.2. China and South Korea less than 1. मतलब क्या कि 20 साल में लोग हमसे वो रिक्वेस्ट करेंगे जी आपके लोग तो हैं, स्मार्ट भी हैं, वो भेज दें, कुछ हमारी मदद कर दें. हम क्या करें? क्योंकि people are not there, they don't buy things. If they don't buy things, economy stalls. If they don't generate income, they don't pay taxes. So you need people. So Pakistan is well positioned. Number 2, हमारी जो जनरेशन है उसको एक्सेस है इंटरनेट का, AI का. ये पहले नहीं था, 10 साल 20 साल पहले. अब that is a huge advantage. In many countries they don't have that. And नए जो बनते हैं हमारे young people हैं, student हैं, they are much more open to try new things than the old people. Their grandparents, they were afraid of so many things. There's so many things that have gone wrong, but new generation doesn't remember the history, which is a good thing. The third thing is that this is why we created Aspire. 5 साल पहले कोई 10-20 लोग इकट्ठे हुए, उनमें से 4-5 रह गए हैं जो अभी तक उसको परस्यू कर रहे हैं एज ए बोर्ड मेंबर्स. वी हैव bunch of founding members and bunch of you guys who are coming up. हम 4 साल में बेशुमार हजारों मेंटरशिप सेशन कर चुके हैं. ऑन जनरेटिव AI में हम 6 वीक का कोर्स पढ़ाते हैं, हम यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. सो हम अपने आप को करने की हम कोशिश कर रहे हैं. दिस इज माय 1 मिनट कमर्शियल कि आप सब लोग अगर अपने लोगों को बुलाएं, बताएं कि एस्पायर क्या करता है, क्या करना चाह रहा है, तो आप भी इसमें मदद कर सकेंगे हमारे बारे में. बिकॉज वी गोना फिक्स इट, नोबडी आउटसाइड द कंट्री इज गोना कम फिक्स इट. ऑलराइट, लेट मी स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ऑन आवर मेन टॉपिक. मेन टॉपिक ये है कि स्टार्टअप जो होती हैं, नई बिजनेस स्टार्ट होते हैं, क्यों नॉर्मली फेल होते हैं. द रियल रीजन इज नॉट कि दे रन आउट ऑफ मनी और समथिंग बैड हैपेंस और गवर्नमेंट की रेगुलेशन के हो गया. मोस्ट पीपल spend too much time building the product rather than talking to customer or validating कि वाकई प्रॉब्लम है भी कि नहीं है. तो अगर आप कुछ ना सीखें इस आज के सेशन में, सिर्फ ये बात सीख जाएं कि क्यों स्टार्टअप फेल होती हैं, मैं क्या कर सकता हूं कि मेरी स्टार्टअप आइडिया फेल ना हो, तो दिस विल बी गुड टाइम वेल स्पेंट. सो मोस्ट पीपल
I've seen I teach entrepreneurship at University of California, Berkeley for the last 19 years. I've seen thousands of students take my class and try to start companies. What I'm seeing is that most people fail because they fall in love with their solution, with their technology. You need to fall in love with the problem. You need to more you understand the problem. And I've made this mistake myself. ये नहीं कि मुझे इल्हाम हुआ था कि आप प्रॉब्लम शुरू करें, मैंने ये अपनी खुद डुबा चुका हूँ एक दो कंपनियां इस हिसाब से गलती से फुली अंडरस्टैंड नहीं किया था. सो मैंने काफी इसको बात को स्टार्ट किया कि क्या करना चाहता है. स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. सो most people what they do is in the left hand column. Most people say I have a great idea, let's do an app. मैं अभी छुप के बताऊंगा कोई इसको कोई कुछ चुरा ना ले 6 महीने तक. Then I will launch it carefully till I run out of money. What you should be doing is understand by talking to dozens, hundreds of potential users कि भाई चक्कर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं आप सॉल्व करते, क्या प्रॉब्लम है, इसको अब तक सॉल्व क्यों नहीं कर सके, कहाँ देखा है, लोग क्यों नहीं लेते हैं. तब आपको क्लैरिटी आएगी. ये क्लैरिटी पिछले 5-10 लोगों से नहीं आती. ये आपको यू हैव टू टॉक टू 100 people. You're not trying to sell them on your solution. You're trying to understand what will delight them. उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है. तो आप ये कर सकें. You start by observing. Then you make sure कि वाकई सही बात है कि मेरे ऑब्जर्वेशन में गलत है. Validate करें. Then you begin to understand about 30-40 conversation and interviews कि वाकई ये प्रॉब्लम है. Then आपको you have to figure out who needs this more. मैं एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, उनसे 2 सवाल करता हूँ सिर्फ. मुझे बताने के लिए जी हमने ये ऐप बनाई है जी, ये भी करती है जी, वो भी करती है, ऐसी भी है. यार उसको छोड़ें आप, 2 सवाल के जवाब दें. क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और किसको प्रॉब्लम है. मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन क्रिस्पली. छोड़ो ये हर चीज को छोड़ो, बस 2 सवाल का जवाब है. हु नीड्स यू मोर एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम यू ट्राइंग टू सॉल्व. वंस यू गेट दैट क्लैरिटी यू आर वे अहेड ऑफ एवरीबॉडी एल्स. So the valid criteria होगी, but problem ऐसी है कि people experience this on a regular basis, monthly, daily, जो भी है. और जो भी solution आजकल आपके पास available हैं वो ठीक नहीं है. And lots of people need this. अब देखें ना, ये करीम या उबर की बात करते हैं. अब करीम और उबर में ये भी है कि ठीक है मैं लेना तो चाहता हूँ, लेकिन अम्मी ने कहा था बचपन से कि किसी की गाड़ी में नहीं घुसना. आप मुझे कह रहे हैं कि गाड़ी में घुस जाओ, ये बंदा कौन है. So you're reluctant. So maybe I will see, okay, maybe I have a service which only has women driver. So women driver may feel more comfortable taking a ride if they know who the person is. So this could be something is a large market. Need is everywhere, but कहाँ need है? कोयटे में, झेलम में, या लाहौर में, या कराची में. So once you begin to ask those questions, you realize कि भाई इस शहर में because इतनी टैक्सियां नहीं हैं और फीमेल पॉपुलेशन जो वर्क भी कर रही है, यूनिवर्सिटी में जा रही है, उनको जरूरत है कि हाँ सखर में शुरू करते हैं. So that clarity comes after you have talked to enough people. This is if you do learn nothing else, just learn that, you'll be doing much better. So there are all kind of industries where there's a huge opportunity in Pakistan. देखिए ना, हमें कमी है डॉक्टरों की, कमी है नर्सों की. हेल्थ टेक में अभी ब्रॉडबैंड की वजह से कैन यू गेट ए डायग्नोसिस विदाउट अपने विलेज को छोड़ के अपने बस लेके आप जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, आपके 4 दिन ज़ाया हो गए हैं. तो टेली हेल्थ इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी. सेम थिंग विद फिनटेक, एबल टू गेट ए लोन, एबल टू बाय स्मॉल फ्रॉम गाय टू मशीनरी टू बी एबल टू जनरेट. उसमें भी है, एग्रीकल्चर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं. सो मैंने मेरे हिसाब से जो मैंने किया कि एस्पायर भी मदद कर रहा है कि इन 7 एरियाज में बेशुमार अनमेट नीड्स हैं. अगर इनमें से आप 1 या 2 सेलेक्ट करें, मार्केट रिसर्च करें, आपको भी अपॉर्चुनिटी लगेगी कि क्या कर सकते हैं. इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स जस्ट यू हैव टू बी फोकस्ड. सो जस्ट टू समराइज व्हाट वी नीड टू डू, इंटरव्यू 20, 30, 40, 100 लोगों से. द क्वेश्चन यूर आस्किंग ये कि आपकी जिंदगी में क्या फ्रस्ट्रेशन है, इसके बारे में. मतलब अगर हेल्थ कर रहे हैं कि डॉक्टर को देखने की आसानी होती है, कहाँ जाते हैं, कितने लगते हैं, कितना टाइम ज़ाया होता है, आपको मिल जाते हैं, आपको पता है डॉक्टर अच्छा है कि बुरा है, कैसे पता चलता है.
Then you listening to this thing. I wish it was this way. Why doesn't it work this way? This is so annoying. Those are your clues because they're telling you, okay, what's wrong with them. So after asking this question, record those conversations because you're going to have 20, 30, 50, 60 conversation. सब भूल जाएंगे आपके किसने क्या कहा था. लेकिन आप सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करो और आपको क्लैरिटी आएगी. जैसे आप घर से निकलते हैं हज करने के लिए तो आपका प्लान करना पड़ता है. कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कहाँ पहुंचूंगा, कितने दिन निकलूंगा, कितने दिन लगेंगे. तो बिजनेस तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. So if you ask this kind of question, and I can, Shadana, I can share these slides with you. Uh, I'll send her a PDF. So this is the kind of question that the question I like are ask people like point number 4. Suppose you were magically, आपके पास पावर थी, आप कुछ भी कर सकते हो, क्या करोगे? कैसे इसको फिक्स करोगे? What's stopping you from trying something new? More you learn what's in their head, more you can come up with a better solution. सो वेग इंफॉर्मेशन होती है. लोग आसपास जो आके कहते हैं जी मैंने कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश की थी, चली नहीं, पर हेल्थ केयर तो पाकिस्तान में बहुत इनएफिशिएंट है. अच्छा, लेकिन क्यों इनएफिशिएंट है, कहाँ है, क्या चक्कर है? अगर बताएं कि हॉस्पिटल्स आर स्पेंडिंग 40% ऑफ द टाइम, वो बंदे से आते हैं उससे बात करके कि कहाँ दर्द है, कब शुरू हुई थी, क्या हुआ था, उसमें आपको टाइम लग जाता है. तो एक एक डॉक्टर 1 घंटे में सिर्फ 5 पेशेंट देख सकता है. सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक. अगर एक वही डॉक्टर 10 पेशेंट देख सके 1 घंटे में, क्योंकि सबने सब चीजें कलेक्ट कर ली हैं उससे पहले, जब डॉक्टर से मुलाकात होगी सब चीजें उसके सामने एक सफे पे आ जाएंगी, देन इट विल बी इंटरेस्टिंग. So you want you to be very specific. Like vague will be agriculture is outdated. Specific will be a grain storage facility lose 15% of inventory because of बोरी में कीड़ा लग जाता है. So you have to be that specific. So then you'll be able to say कि मैंने मेरी कंपनी हमने स्टार्ट की थी कॉल टेलीसेंस. हम ये काम करते थे. वी वर यूजिंग वायरलेस सेंसर टू डिटेक्ट कि आपका अनाज खराब कब हो जाएगा, 1 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, ताकि उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या करना है. तो व्हाट आई फाउंड के we didn't say hey let's put some wireless sensor बोरियों के करीब, देखेंगे क्या होता है. we really begin to understand कि क्या उनको प्रॉब्लम क्या थी, क्यों थी, क्यों नहीं हो सकती थी. So this is the kind of clarity you need before you can really make an impact. So you want a mindset change. Instead of I have a great idea, you want people to say, I discovered a painful problem. Instead of saying this technology is cool, you can say this problem is costly and urgent, needs to be solved. If you can begin to say the sentences on the right-hand column, now you're getting clarity of mind. So this is what I want you to appreciate and tell other people around you. इस तरह से हम अगर क्लैरिटी करेंगे तो देन विल हैव कि हमें क्या समझ आई है. सो द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स यही होती हैं. पीपल फॉल इन लव विद द टेक्नोलॉजी. दे फॉल इन लव कि भाई यार इसको इजहार अक्सर को म्यूट कर दो. व्हाट्स द सॉल्यूशन, लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम. So this is the thing we want to avoid. There could be some legal reason you cannot do. भाई मेरे इजहार सबको म्यूट कर दे यार. So my point is, just to finish this off, startups fail not because they couldn't build the solution. Problem is they did not understand the problem, so you built something which not enough people cared about. So this is the summary. So my point is, ideas are cheap, problems are valuable. Understanding the problem is the greatest thing an entrepreneur can do to solve the problem and hopefully make some profitable business out of this. So best startups serve existing needs. So figure out what is the problem and how you're going to solve it through systematic way. In Aspire, we have done many workshops trying to teach people about this. So this is what I wanted to share with you this morning. Okay, if you did nothing else but focused on understanding the problem, you'll have a much better chance of creating a business with people which will make money and you can solve a problem. Nobody outside Pakistan is going to solve it. You and I will have to solve this problem. So let's just focus on how we can do this. So let me pause here and answer any question you have. And I know you have a busy program, so I will not
take too much of your time. So you can unmute Thank you so yourself, much. ask any question, or you can also type it if you don't want to unmute. Anyone if have any questions, so they can raise their hands, so we can know and then move on. Well, good. Aisha is clear. So No need to. yeah, your presentation has cleared everything. Mashallah. So Well, Mohammad Namir, you have question. Please be quick in asking your question and be specific, please. अस्सलाम वालेकुम सर। Mashallah. सर ये स्टेप्स जो आपने बताए इसे फॉलो करके फिर एग्जीक्यूशन का स्टेप क्या होगा? हाउ डू यू टेक इट टू द प्रोडक्शन? Take it to the production. Once you have solution, then you figure out, okay, once you understood the problem, which takes few weeks to few months to understand it really, then you begin to figure out a solution. Solution is not the hardest part. Understanding the problem is the hardest part. एक solution आपको समझ आ गया है, then you'll be able to talk to other co-conspirators who can uh, help you identify a working solution, uh, other people who can bring different skills as well as investors. So just like any problem, आपके suppose you have a problem कि एक नया घर लेना है या कोई नई चीज लेनी है. Once you understand क्या लेना है, कहाँ लेना है, कितने का लेना है, क्या होता है, then everything else falls into place. It's not easy, but I mean, you're not saying the journey is automatic, but my saying is most people start journey incorrectly and end up in a jungle. So yes, there will be other execution issues, and there's a education around you. There are people who can mentor you, people who can even be investors in you. All that is possible, but start with the clarity of mind. When you speak to potential investor with this clarity, कि क्या प्रॉब्लम आपने स्पॉट की है, कितने लोगों से बात की है, इट्स लॉट इजियर टू रेज मनी. मोस्ट पीपल कम टू मी टू रेज मनी, उनका आइडिया क्लियर नहीं होता, वेग होता है. They haven't done the market research, so they get no traction, no money from anybody. Then they blame Pakistan. It's not about Pakistan. It's about you don't have the clarity. Challenge Shazana, you can True. continue. I will send you a Ji. new PDF with a couple of changes I made since yesterday. So I'll send you that right now. So you can distribute anybody who wants it Sure. from you. Challenge ji, I hope you have a great Sure. program and please Thank you Sir, so continue. I have a much for question. your हाँ जी. आप Hello, सर sir. हम Assalamu क्वेश्चन alaikum. चैट में ले लें. क्वेश्चन हम चैट Hello, में ले sir. लें और हम अपने प्रोग्राम को आगे चलो बढ़ाएं. एक क्वेश्चन लाइव ले लेते हैं, उसके बाद में चैट में ले लेंगे. एक पूछ लें. ओके ओके Sir, I am प्लीज. recently studying in a university and I am recently in a first semester of computer science department. Should I have to focus on some skill or should I have to focus on my study in now? Both. You have to and to study, you also have to figure out ये क्या स्किल मैं एक्वायर कर रहा हूँ, कहाँ अप्लाई करूंगा. दिस वाई पीपल होते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं. जब हम काम Yes. यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, साथ में इंटर्नशिप भी कर रहे थे, लोगों से मुलाकात भी कर रहे थे, समझ रहे कहाँ, बिकॉज ये आपको रेलेवेंट चीजें आपको सीखी ना. पता चला कि अगर वाकई जहाँ इंटर्नशिप के उसमें भी कोर्स ले लूँ, उसमें भी एआई भी सीख लूँ, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ थोड़ा सा पता हो जाए, ताकि मैं बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता हूँ. तो यू हैव टू डू बोथ. इट्स नॉट वन और द अदर. अब नहाते भी हैं और खाना भी खाते हैं, दोनों काम करते हैं एक दिन में, ये भी करें. Thank you, sir. ओके शजाना, प्लीज कंटिन्यू. ओके थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और एक अच्छा सा मतलब एक बेस आपने बहुत अच्छा हमारा बना दिया इस प्रोग्राम का. एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विथ आवर फर्स्ट पैनल डिस्कशन.